Rolling. What exactly happened? Well, I really don't know from where to begin. I'm shell shocked with the reaction, and honestly, you guys are the media. Y'all are the voice of the nation. Y'all have to act responsibly. We went there for a cause. We went there to spread the AIDS awareness. Richard doesn't belong to our country, and he's so passionate about the cause. He has directed most of the money from the Bill and Melinda Gates Foundation to spread the awareness in our country because he's passionate about it. And y'all have made such a media ruckus. People are overreacting because y'all guys have been showing the clippings again and again and again. The real issue is that we went there to address the truckers against this whole stigma that we have in India about AIDS and HIV. And if you know, I don't know if you all guys are aware, but India is the second largest infected country with HIV and AIDS. So we as celebrities have taken out our time, we have gone there, we have tried to do our bit. What have y'all guys done? What have y'all guys done to take away from this apathy and stigma that's attached to the virus? What have y'all guys done? Other than jalawing my putlas and Richard Gere's putlas and asking me to apologize for what? ये जोक सा बन गया है. किसी भी मुद्दे को लेकर आप पॉलिटिसाइज कर देते हैं. मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं. मैं ये नहीं चाहती कि लोग हमारे कंट्री में आके रिग्रेट करें. एक फॉरेनर आता है हमारे कंट्री में हमारे लिए कुछ करने के लिए, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको थैंक करना चाहिए. वी आर मेकिंग फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स. और जहाँ तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात है, आई नो y'all are aware, I am aware, अतिथि देवो भव. वी शुड रिस्पेक्ट दैट. और मैं कोई यहाँ पे भाषण देने नहीं आई हूँ. मैं इसलिए पहली बार रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है लोगों ने. एंड आई डोंट वांट दिस टू गो to greater lengths. I don't think you all should be wasting national time on such a frivolous thing. Talk about the issue of AIDS. Talk about the issue, that we have to deal with. Not about something like this. And he does not belong to our culture, so how can you question him on culture? He loves India. He wears a tulsi mala on his hand. और मैं कोई defend नहीं कर रही हूँ Richard Gere को. But you know how much he has done for the cause for the last 9-10 years. मैं तो इस cause से अभी जुड़ी हूँ. He's been attached. He's been working passionately towards this cause. He's called me 3 times since the morning to apologize to me. And he said, I never wanted to hurt the sentiments of Indian people. If I have, I'm sorry, Shilpa. And I want to bring that across to the people. This is not how we treat our guests. Please don't do that. And it's my humble appeal to all the people watching me, to all my fans who have taken it very personally that he has done this. I don't think he did anything that was offensive. If I find it offensive, I will tell you all. I have always stood for my dignity. I'm very, very proud of our culture. I'm very proud to be Indian. And if somebody would have, overstepped the mark with me, I would have reacted. I have not reacted. Because for me, it's a bigger issue. We were there to do a good job. I was taken aback because I didn't understand what was happening. And then I saw everything being blown out of proportion on TV. I'm not allowed to work. My entire shooting has been disrupted. You all know how I've been working. As an actor, my priority is my work. I'm not allowed to work. I have to sit and give interviews on such a trivial matter. And I know all of you guys sitting here know it is a very trivial matter. I can see it on your faces. You know it's been blown out of proportion. So why are we doing this? Why are we bringing the image of our country down? We're talking about India being the next superpower. We're talking about India being progressive, and this is how we behave. शिल्पा, ये जो एक्सट्रीमिस्ट यहाँ के प्रदर्शन कर रहे थे पूरी शूटिंग पे जो रुकावट डाल रहे थे, उन्हें क्या कहेंगे आप इस तरह का बिहेवियर का? मैंने कहा, अगर ये हमारी सभ्यता है, अगर ये हमारी संस्कृति है, और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे पुतले जलाने से आप हमारे सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, प्लीज करिए. मैं और क्या कर सकती हूँ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे लिप्स पे किस किया? क्या आपने कभी देखा नहीं है टीवी के कि किसी ने चीक पे किसी को किस किया? And what was he doing? He was trying to strike a dance pose.
ही वॉज ट्राइंग टू स्ट्राइक अ डांस पोज और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी पिछली फिल्म जो है शालवी डांस, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे दोपहर को, तो हमने कहा कि वो डांस स्टेप ज़रा दिखा दीजिए। सो ही डिड इट इम्प्रॉम्प्टू ऑन स्टेज, इवन आई डिडंट रियलाइज व्हाट ही वाज डूइंग। तो आई वाज टेकन अबैक। फिर मुझे उसके बाद पता चला व्हेन ही वेंट ऑन हिज नीज एंड ही सेड थैंक यू फॉर डूइंग दिस, तब मुझे समझ में आया कि वो डांस करना चाहते थे क्योंकि वो हिंदी नहीं बात कर सकते एंड ही कुड नॉट कम्युनिकेट विद द विद द ट्रकर्स। तो ही थॉट हमारे बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट का नाम मतलब एंटरटेनमेंट मतलब डांस और सॉन्ग, सो ही ट्राई टू डू समथिंग एंटरटेनिंग फॉर देम और उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। मेरा बस यही कहना है कि आप रिएक्ट ज़रूर करें लेकिन ओवर रिएक्ट ना करें। डोंट मेक अस लुक स्टूपिड। Not at all, not at all. In fact, I'm taking up for our country people. I don't want us to look like idiots in front of the foreign media. आपको क्या लगता है ये वहाँ पे जाके उठेगा नहीं मुद्दा? ब्रिटेन में भी उठेगा because somewhere I've somehow some people have started to know me there, and Richard has already been famous there. So ये automatically pick up हो जाएगा. We are living in the world of internet. But don't make yourselves look silly. Would this in any ways affect your international career, Shilpa? Would this in any ways affect your international career? It doesn't matter to me. I'm not here to sit and safeguard my international career. I'm doing this because what is wrong, and what is right, and this is wrong, and I know the difference between right or wrong. आपको ये लगता है कि बिग ब्रदर में जो आपका स्टैंड रहा तो आपको अचानक भारतीय संस्कृति का मतलब रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, वो इमेज कहीं ना कहीं more like the poster girl of India now? मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एंड आई जस्ट वांट टू बी फेयर, मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहती यहाँ पे, और मैं किसी के किसी के सेंसिबिलिटीज़ को भी हर्ट नहीं करना चाहती। आई एम समवन who has always lived with dignity and I want to continue to live like that. लेकिन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मतलब बतंगड़ ना बनाएं। तो मजाक मत करो। Don't do it with with issues that really need to be talked about. You'll never ever talk about them. Such a silly issue and making such a big hue and cry. आप लोगों को उकसाते हैं। इंटीरियर्स में जो लोग हैं वो सडनली बहुत भड़क चुके हैं because they don't know what has happened. उनको तो पता भी नहीं है। हम लोग एड्स अवेयरनेस करने एक फंक्शन के लिए गए थे, एड्स अवेयरनेस के फंक्शन के लिए। Don't misuse the freedom of expression. Don't misuse our democracy. Please don't. Like I said, please react, but don't overreact. शिल्पा, एक तरफ का कहना है जी जी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे एड्स अवेयरनेस हो रहा हो और वहाँ सब मीडिया आई है उस इवेंट को कवर करने के लिए। पिछली बार भी जब आए थे, मीडिया वाज नॉट अलाउड टू इवन कवर because we were shooting a documentary yesterday. No, but the previous time also the same thing happened when Richard Gere came. We were not allowed to cover the event. देखिए, on media. So मैं how are we going to bring about this? So this is the way you bring about the issue. No, just you're talking about Richard Gere bringing about the awareness. So he's not even coming in front of the media. Because he doesn't want mileage out of it. Someone who's a foreigner who doesn't speak the language has still come here to do it. He's funding the whole program. Doesn't that say enough for his intention? But wouldn't you want to talk about it? What? Like it's probably a message from him to the people. I think he did. He had an interpreter there because he couldn't speak. That's the reason he did that, only to entertain people. मतलब शिल्पा, आप ये कहना चाह रही कि अगर वो उसका रिहर्स्ड होता तो शायद इतनी ऑकवर्ड पोजीशन बिल्कुल ऐसा लगता ज़रूर है कि मैं ऑकवर्ड हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि एट द स्पर द मोमेंट क्या हुआ. सो दैट मस्ट हैव लुक्ड स्लाइटली ऑकवर्ड. I understand it must have looked like he went slightly overboard, but that was really not the intention. His intention was that of just entertaining the people, and that was it. अगर मुझे लगा होता कि उन्होंने मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती की है, मैं ज़रूर रिएक्ट करती. ऐसा कुछ हुआ नहीं. मैंने मजाक नहीं किया. ऐसा ये कुछ ज़्यादा ही हो गया. जब आपने कहा कि ये जिस तरह से आपने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस पर आपको कोई फ़ोन इस तरह के आए, कहीं धमकी आई कहीं से? बिल्कुल नहीं. देखिए, मैं कर्म में बिलीव करती हूँ. मैं अपना काम करती जाऊँगी, और
वो डिसाइड करेंगे मेरे फेट को। और मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि रिचर्ड ने कुछ ज़्यादा गलत किया है। शिल्पा, कुछ लोगों का ये मानना है किसी के ऑफिस तोड़े गए, स्टार न्यूज़ के ऑफिस तोड़े गए, और पता नहीं क्या क्या हल्ला हुआ जा रहा है यहाँ पे। शिल्पा, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम एक बात रिएक्शन कलाकार फ्रॉम द जो होता पीपल है वो उस देश का कल्चरल एम्बेसडर होता है, उस देश में जाके उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं का पालन करते हुए आप भी जिस तरह आपने बिग ब्रदर में किया कि आपने भारतीय संस्कृति को उस तरह से किया, क्या आपको नहीं लगता कि रिचर्ड को भी हमारी मापदंडों के हिसाब से लेकिन आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे देश को बिलोंग नहीं करते। ही बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, सो व्हाई आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम? अगर मैं एक फॉरेन कंट्री में जाके नमस्ते करती हूँ, वो मेरा कल्चर है, वो मेरा प्रेरोगेटिव है। और उन्होंने ऐसी कोई अश्लील हरकत तो की नहीं कि हम लोगों को इतना गुस्सा होना चाहिए। इट्स रियली सिली। Anyways, मैंने इसके बारे में बहुत Shilpa, during that time, did you actually foresee that such a thing would happen or could happen when he I am not surprised with anything in life. मुझे आज के दौर में कुछ भी सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि मीडिया छोटी सी छोटी बात को बहुत बड़ा बना देती है, और कभी कभी बहुत बड़ी बातों को बहुत छोटा बना देती है। सो आई एम नॉट सरप्राइज। Can you see the police? They're scared. They've come and they've burnt putlas, and you can see the people who have done it are actually not from political parties. They're just people trying to gain mileage. They're 20 young boys who are laughing and screaming and joking. They really don't even care. I want to ask everybody who's reacting like this, what have they done for the cause? What have they done for the cause of HIV and AIDS? I want to know. If you want to talk about what we have done right and wrong, first do something for the cause, and then you'll have the right to actually point a finger at us. You've at least tried to do something better. What have y'all done? And I'm happy that this has happened, because at least now people will talk about the issue of AIDS and HIV. तो ठीक है, शिवजी ने भी पॉइजन पी लिया था, मैं भी पी लूंगी। It's okay. करो। Shilpa, last, what conversation did you have with Richard Gere at the end? My conversation with Richard was. Shilpa, in English. Well, Richard called and he said that, I'm really sorry, Shilpa, that you've been put through all of this. He was really worried कि कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए, और मेरे शूटिंग को डिसरप्ट किया गया। यहाँ पे मेट्रो की शूटिंग चल रही है, अनुराग couldn't shoot because we were having such a tough time trying to take away all the crowds and the media. I mean, you can't disrupt people's work. And that's when I decided I was going to speak. And I never ever come out in the open and I speak like this. I just feel sad कि एक आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है हमारे देश के लिए, और उसे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो बिल्कुल ही अनकॉल्ड है। और असल जो मुद्दा था, जो एड्स का मुद्दा था, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मतलब नोटिस जाए कि रिचर्ड कांट एंटर द कंट्री एंड आई कांट गेट आउट ऑफ माई हाउस, आई सेड आई रादर एड्रेस द प्रेस एंड द पीपल। इफ यू ऑल बिलीव मी, देन प्लीज थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। शिल्पा, जो लोग कह रहे हैं आप माफी मांगिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बिल्कुल अजीब लगा when he actually apologized to me, and he specially told me to tell the media that he didn't want to hurt any sensibilities, any Indian sensibilities, and he apologized to me profusely, and I was embarrassed. I was really embarrassed. लेकिन शिल्पा, जो लोग बोल रहे हैं कि वो माफी मांगे, उनके लिए आप क्या कहेंगी? जो लोग कौन वो? रिचर्ड गेयर माफी मांगे, जो पॉलिटिकल क्यों? जैसे शिवसेना वगैरह क्या हुआ था? पॉलिटिशियंस को किस किया गया? उन्होंने उनका ये कहना तो क्यों माफी मांगनी चाहिए उनसे? आप बताइए मुझे, क्या सही है क्या गलत है? शिल्पा, जब मीडिया आप लोग खुद हंस रहे हो, आप लोगों को पता है कि ये मतलब बहुत ही अजीब सा कॉन्वर्सेशन। उनके लिए मैसेज जाना चाहिए। शिल्पा को उन्हें क्या जवाब तो है? किनको? जो लोग आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इन्होंने मैं वापस पूछ रही, क्या किया है इन्होंने हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या किया है? कौन है ये लोग? इनके आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए मुझे पहले तो। कौन है? आपको लगता है कि एज ए फिल्म स्टार, एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आप कैसे रिएक्ट करें चीजों पे? I am not talking to you as an actor today. I am talking to you as a responsible Indian citizen. And I urge the press and the Indian people to please understand the difference between right and wrong, between overreaction and reaction. Please react. But there was nothing that you needed to react so adversely. What he did was very sweet. It was a good gesture. It was all in good humor.
उसे बस पहचानिए और मेरी आवाज़ बैठ गई है प्लीज़ मेरे से ज़्यादा एक बात की लास्ट में जानना चाहेंगे कि वो पराग मैं gesture थप्पड़ मारूंगी तुझे बाय वो शेल्वी डांस से किया गया एक क्वेश्चन था और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा होमवर्क किया है कि Shalvi Dance was one of Richard's films and he had struck this pose in the movie and he only tried to entertain the people with that. And I was unaware that he was going to do it, so I was taken aback. So that's why my reaction. राखी सावंत ने बोला कि शिल्पा को उसी और मैं इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती. I don't want to dignify. Thank you.